In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Thank you very much indeed. Have a blessed day and good day. So today's lecture is going to be about Back to Basics, lecture number 13D, and it's about may and might once again. Continuously we're studying about may and might. It's going to be the lecture number 4, and it's about permission and wishes and blessings. In the first lecture, we had the highlights of may and might, all the basic uses of may and might, including possibility or probability, and permission and wishes and blessings. The second lecture was about all the structural English structures, 8 structures at a stretch: may, maybe, may have been, might be, might ever might have been. And we studied some practice sentences as well in the second lecture. The third lecture yesterday, it was also an important lecture in which we recorded certain 20 plus sentences, the various uses and the miscellaneous sentences, including the continuous structure of may as well. And today's lecture is going to be about permission and wishes and blessings. That's great. Okay, so the first one is the permission. Let's start talking about it. और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो let's talk about the sentences first. For example, may I come in asking for permission? इजाजत लेते हुए, और उसका अगर जवाब देंगे positively, yes you may, और इसका इनकार करेंगे refusing permission, no you mayn't. ये इसके एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स हैं. साथ ही साथ मे और मे नॉट के सूरत में आपने दोनों का एक शॉर्ट आंसर भी दे दिया है. फिर अगला सेंटेंस है मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं? यस यू मे, नो यू मेंट. मे के इस्तेमाल के साथ जो परमिशन होती है वो दैट्स अ फॉर्मल परमिशन. मे और कुड हम लेटर पढ़ेंगे, दोनों के साथ आप फॉर्मल पोलाइट परमिशन का इंतखाब करती हैं. और कैन के साथ जो परमिशन है वो आपकी होती है फ्रेंडली इनफॉर्मल परमिशन. माइट आई का भी एक डिफरेंट यूज देखते हैं अभी. मे आई लीव अर्ली टुडे, यस यू मे, और नो यू मेंट. माइट आई के साथ जो परमिशन लेती हैं ये होती नॉर्मली व्हेन यू आर फीलिंग नर्वस and you fear that maybe the permission will not be granted because you are asking for that thing too many times, quite frequently. इजाजत के इनकार के जो खौफ से जब आप परमिशन मांगते हैं तो आप कहते हैं might I use your car for the weekend, क्या वीकेंड के लिए आपकी गाड़ी को इस्तेमाल कर सकता हूं? और इस तरह से फिर could, can, could और may. कैन के साथ परमिशन देखिएगा, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज. आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप उसको सेंटेंस को फर्दर पोलाइट बनाना चाहते हैं. लेकिन कैन के साथ आप एक इनफॉर्मल फ्रेंडली परमिशन लेती हैं. कैन आई यूज योर फोन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं या पूछ सकता हूं. अगर आपने फॉर्मल और पोलाइट परमिशन लेनी है तो फिर could I या may I के साथ आप करती हैं. may I borrow your pen, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूं, उधार ले सकता हूं. या could I borrow your pen, could I go home now, या may I go home now. ये आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास be allowed to and be permitted to. ये दोनों को इस्तेमाल कर सकती हैं आप फंक्शनल ऑफिशियल लैंग्वेज में. be allowed to, be permitted to, ये पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं. मिसाल के क्वेश्चन पूछते हुए या परमिशन लेते हुए am I allowed to use the toilet, क्या मैं टॉयलेट इस्तेमाल कर सकता हूं? आंसर देते हुए yes you are, या yes you are allowed to, या yes absolutely, या yes exactly. आप इसका शॉर्ट आंसर दे सकते हैं. और अगर आप कहें कि am I permitted to stay here tonight, कि मैं आज रात यहाँ ठहरने की इजाजत है मुझे? yes absolutely, yes you are, yes you may भी कह सकती हैं. allowed to और permitted को जवाब में may का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि may भी इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है. शॉर्ट रखने के लिए आप may का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं. yes you are allowed to,
You are allowed to use the toilet, इजाजत देते हुए. You aren't allowed to use the toilet, आपको इजाजत नहीं है टॉयलेट इस्तेमाल करेगी. इजाजत से इनकार करते हुए. Am I permitted to stay here tonight? You aren't permitted to stay here tonight, इजाजत से इनकार करते हुए. You are permitted to stay here tonight, इजाजत देते हुए granting permission के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप. नीचे कुछ हमारे पास और वंडरफुल वर्ड्स हैं अबाउट लेट, अलाउ एंड परमिट के हवाले से. लेट और अलाउ दोनों इजाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेट के कुछ और दीगर यूसेस भी हैं. ये इंपेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल भी होता है और इसके अलावा ये ऑफर्स और सजेशंस के लिए इस्तेमाल भी होता है. हम लेटर इसका लेक्चर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेट को परमिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेट समबडी डू समथिंग. लेट समबडी डू, लेट के बाद समबडी कोई फर्द का नाम आएगा. डू समथिंग, यहां डू मीन्स वर्ब आएगा और समथिंग अगर कोई उसका कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां आएगा. लिहाजा इसको डू समथिंग. लेकिन या अलाउ जहां इस्तेमाल करना है, यहां आपने अलाउ समबडी टू डू समथिंग. डू से पहले मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप डू का इस्तेमाल भी करेंगे. यहां आप लेट के साथ भी डू जहां है ये इन्फिनेटिव है, ये बेयर इन्फिनेटिव है जिसमें टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म है. और यहां आपने अलाउ के बाद इन्फिनेटिव लगाना है टू के साथ. टू इन्फिनेटिव है ये, टू डू, इसमें फर्स्ट फॉर्म से पहले डू आएगा. मतलब एक ही होगा. आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आई नेवर लेट माई फ्रेंड पे फॉर डिनर. मैं अपने दोस्त को डिनर के लिए पे करने की इजाजत नहीं देता. आई नेवर लेट माई फ्रेंड. और अगर यहां होता आई नेवर अलाउ माई फ्रेंड होता तो फिर टू का इस्तेमाल भी. पे से पहले, पे फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू आप लगाएंगे तो ये फिर अलाउ के साथ टू का इस्तेमाल जरूरी है फर्स्ट फॉर्म से पहले. आई नेवर अलाउ माई फ्रेंड टू पे फॉर डिनर. इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं. लेट द डॉग, अगर लेट लगाएं तो लेट द डॉग गो आउटसाइड, कुत्ते को बाहर जाने दो. और अगर अलाउ आए, अलाउ द डॉग टू गो आउटसाइड. अलाउ में गो से पहले फिर टू आना जरूरी है. अच्छा जी. इसके बाद ही नेवर लेट्स मी क्रॉस द लिमिट, क्रॉस द रोड अलोन. वो मुझे कभी इजाजत नहीं देता कि मैं अकेला सड़क पार करूं. ही नेवर लेट्स मी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ. लेट के बाद एस का इजाफा होगा. ही नेवर लेट्स मी, वो कभी इजाजत नहीं देता. लेट्स मी, टू नहीं आएगा. लेट्स मी क्रॉस द रोड अलोन. और अगर अलाउ होगा तो ही नेवर अलाउस मी टू क्रॉस द रोड अलोन, टू क्रॉस द लिमिट भी एक सेंटेंस हो सकता है. अगला है माई मदर अलाउड मी टू गो टू द सिनेमा. माई मदर अलाउड मी. अब यहां अलाउ और परमिटेड अगर आप देखें तो अलाउ जो है ये इनफॉर्मल हो सकता है. जहां कोई ऑपोजिशन है, किसी ने कहा कि नहीं जाना तो फादर ने फॉर एग्जाम्पल, मदर ने कहा नहीं आपको इजाजत मिल जाएगी, यू आर अलाउड टू. यहां ये इनफॉर्मल यूज हुआ फिर इसका. यू आर अलाउड टू गो टू द सिनेमा. और अगर आपने फॉर्मल इजाजत देनी है तो माई बॉस परमिटेड टू, ये ऑफिशियल फॉर्मल परमिशन के लिए परमिट इस्तेमाल होता है. तो माई बॉस परमिटेड अस, उसने इजाजत दी टू यूज द ऑफिस किचन, ऑफिस की किचन को इस्तेमाल करने के लिए. तो ये हमारा बेहतरीन यूजेस थे regarding what? Regarding may and might for permission. Now we are going to talk about the next lecture, next part of the lecture. It's going to be a very important lecture once again, and it's going to be about wishes and blessings. Okay, so wishes और blessings से बात करेंगे for expressing your wishes and hopes for other. जब आप मुस्तकबिल के लिए या किसी फर्द के लिए आप विश कर रहे होते हैं या उसको ब्लेस कर रहे होते हैं, उसको प्रे कर रहे होते हैं, उसको दुआ दे रहे होते हैं, तो दुआया जुमलों में आप इनको इस्तेमाल करते हैं मे को. अब मे के साथ फॉर्मल होगा और किस तरह से समटाइम्स मे के साथ कुछ और मल्टीपल फ्रेजेस को इस्तेमाल किया जा सकता है मे से पहले,
وہ بھی دیکھیں گے, اور اس کے نیکسٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے انفارمل فرینڈلی وے سے بھی آپ جو ہے وہ مے کا استعمال, مے کے بغیر سینٹینسز بنا سکتے ہیں پرمیشن دینے کے لیے, سوری پرمیشن نہیں بلکہ پرے کرنے کے لیے, وش کرنے کے لیے, اور بلیس کرنے کے لیے کسی کو. فار ایگزامپل ہمارے پاس سینٹینس مے کے ساتھ ہیں, فارمل پولائٹ وے اگر استعمال کریں گے, مے یو ہیو اے پراسپرس نیو ایئر, اللہ کرے آپ کا ایک خوشحال نیا سال آئے یا آپ کو ملے, مے یو ہیو, اللہ کرے آپ کو ملے a prosperous new year. میں آپ دعائیہ جملوں میں استعمال کیا, فارمل polite way ہے دعا دینے کا, اور پھر اس طرح سے may you both be very happy, اللہ کرے آپ دونوں بہت خوش رہیں, may the sun shine wherever you go, اللہ کرے سورج چمکے جہاں آپ جائیں دعا دیتے ہوئے, اور may countless blessings come your way, اللہ کرے بے تحاشا جو رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ کے رستے میں آئیں, اور may your birthday bring you everything you wish for, اللہ کرے آپ یہ برتھ ڈے آپ کے لیے وہ ہر چیز لے کر آئے جس کے لیے آپ خواہش کرتے ہیں. May all your dreams come true, اللہ کرے آپ کے تمام خواب سچے ہو جائیں, اور کسی کی اگر آپ دعا کرتے ہیں صحت کے لیے تو may you get well soon, اللہ کرے آپ جو ہے وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں. اور سم ٹائمس آپ کو جو روحانی جسمانی بیماریاں ساری آپ کو انہوں نے آ لیا ہے, اللہ کرے آپ کی جان چھوٹ جائے ان سے, اور آئلٹس بھی آپ بہترین انداز سے بہترین بینڈ سکور کے ساتھ پاس کر پائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ تعالی تو یہ آپ کے پاس ایگزامپلس موجود ہیں جی, میں کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کسی کی صحت کے حوالے سے کوئی مرحوم و مغفور ہو جائے, دنیا سے رخصت ہو جائے, تو اس کے لیے may his soul rest in peace, اللہ کرے اس کی روح امن میں جائے. پیس سے مراد جنہ ہوتا ہے, جنت کی بات ہو رہی ہے, اللہ کرے اس کی روح جنت میں جائے. میں ہر سول بھی ہو سکتا ہے, ہز ہی نہیں ہوگا, خواتین بھی فوت ہوتی ہیں تو ان کی جنت میں روح جائے. اس طرح سے یہ آپ دعا دے رہے ہیں کسی مرحوم کو جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. آئیے کچھ اور ایگزامپلس لیتی ہیں ود انٹروڈکٹری فریزز بفور مے. انٹروڈکٹری فریز بھی ہے, کچھ مے سے پہلے کچھ تعارفی فریز بھی ہے. جیسے لیٹس پرے دیٹ ایک انٹروڈکٹری فریز ہے, لیٹس پرے دیٹ, لیٹس ہوپ دیٹ. پہلا دیکھتے ہیں, لیٹس پرے دیٹ ہی مے ریٹرن سیف اینڈ ساؤنڈ ٹو اس, اللہ کرے وہ باحفاظت واپس آ جائے ہمارے پاس. اور لیٹس پرے دیٹ, let's hope that the young people may enjoy many happy years to come, کہ نوجوان لوگ انجوائے کریں جو آنے والے تمام ماہ و سال ہیں. یہ بھی ایک دعا ہے. let's pray that, let's hope that, may سے پہلے ان کا استعمال فریزز کا. یہ بھی فارمل ایکسپریشنز ہیں. آئیے ذرا کچھ انفارمل فرینڈلی وے سے دیکھیں دعائیں کیسے کی جا سکتی ہیں. I hope you will have a fantastic holiday. مجھے امید ہے کہ آپ کا ہالیڈے بہت اچھا گزرے گا. you'll have ڈبل کانٹریکشن ہے, you will have کہ you'll have. I hope you'll have a fantastic holiday. you'll have a fantastic day. اچھا دن گزرے گا آپ کا. ایک اور انداز ہے, have a fabulous birthday dear, اللہ کرے آپ کا بہت زبردست برتھ ڈے گزرے آپ کا. تیسرا ہے hope you two will be very happy, امید کرتے ہیں آپ دونوں بہت خوش رہیں گے. اور آخری ہے let's hope you will pass your exam of IELTS, امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے IELTS کا ایگزام پاس کریں گے. آپ ایک دعا مجھے آپ نے جینیس کو دینی ہے یا مجھے دینی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, فوراً کیا دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جی مجھے دینی ہے دعا آپ نے. May Allah give you success. شاباش, اللہ آپ کو کامیابی دے. Let's hope genius became more successful. May genius become more and more successful. شاباش. May Allah give prosperity. May Allah give you prosperity. اللہ آپ کو prosperity دے, خوشحالی عطا فرمائے. جی. May countless blessings come. ہاں, may countless blessings come your way. اللہ تعالیٰ blessings آپ کے رستے میں آئے. جی. جی hello. May Allah give you
good health. May Allah give you good health and lot of wealth as well. Allah Ta'ala आपको कहना पैसे दे भी कह वो कहना तू तो गूंगा है वो कहना नहीं तू कह all right excuse me yes please कहते हैं उर्दू च दुआ अल्लाह तो ना खुश रखे very good जी may you be happy जी may के साथ May Genius Institute be the number one institute of Pakistan. May the genius be number one institute of Pakistan, of the world or of the planet नहीं कह दिया इन्हें तो कोई बैद नहीं का जी please. May Saqib and Genius Institute Lahore be a sunshine to everyone. Be like a sunshine to everyone. हर एक लिए सूरज की तरह चमके जी. May Allah give you good health. May Allah give you good health. May you success. May you succeed in life. May Allah keep you safe. May Allah give you keep you safe and sound. Thank you very much. ये आपकी सारी दुआएं रिकॉर्ड हो गई हैं और ये सारी अल्लाह ताला आपके लिए भी कबूल और मंजूर फरमाए. Wish you all the very best of luck. Thank you very much indeed, my dear friends. You have had a wonderful lecture today. It was the last lecture regarding me and mine. Tomorrow we're going to start another very, very valuable model work. कौन सा होगा? I'm not going to tell you about that. But tomorrow we'll start talking about it. In the meantime, take care of yourself or keep on watching these videos. They are important regarding the basic concepts of grammar. और फिर इनको notes बनाएं इनके or keep on just revising those notes as well, because you're going to have in this kind of lectures, and inshallah we'll keep on recording other concepts of basic concepts of grammar as well. Or in the meantime, God bless you all. Take care of yourself and bye-bye.